Good morning, students. I hope you all are doing well at your places. And today we'll be doing a very interesting poem about the fountain. So let's just begin with this poem. Title of our poem is The Fountain, right? And in this poem, you will read an interesting poem. In this poem, you will read an interesting poem which is related to the glorious fountain. We must have seen the fountains. They move according to the music. In foreign countries, these fountains, especially in Dubai, if you have been ever visited to Dubai, then you must have seen these kinds of fountain, right? Into the sunshine, full of light. सनशाइन दोपहर की धूप हो रही है, लाइट बहुत तेज है, लीपिंग एंड फ्लैशिंग, कहीं पे वो लीप कर रही है, कहीं पे वो फ्लैशेस मार रही है. फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, सुबह से लेकर शाम तक. दिस मॉर्न इज मॉर्निंग एक्चुअली. इनटू द मूनलाइट, शाम के समय. वाइटर विथ स्नो, स्नो से कवर्ड है. वेविंग लाइक सो फ्लावर लाइक, जिस तरीके से फ्लावर सारे मूव कर रहे हैं. व्हेन द विंड्स ब्लो, जब विंड चलती है, राइट. इनटू द स्टारलाइट, जब शाम की रात हो जाती है, मतलब जब शाम में सितारे निकल जाते हैं. रशिंग इन स्प्रे, सब लोग कैसे होते हैं, जैसे स्प्रिंकल हो रहे हो. हैप्पी एट मिडनाइट, रात के समय बहुत खुश होते हैं. हैप्पी बाय डे, और डे में भी बहुत खुश रहते हैं. इवन इन मोशन, जब वो मोशन में मीन्स दे आर मूविंग. ब्लिट्सम एंड चेरी, सब लोग बहुत खुश होते हैं. स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वुड, ऐसे लगता है जैसे स्वर्ग में आ चुके हैं. नेवर अ वेरी, मीन्स कभी भी कोई डरता नहीं है. ग्लैड ऑल दी वेदर्स, सारे वेदर से सब बहुत खुश हैं. स्टिल सीमिंग बेस्ट, कि चलो अब कुछ और अच्छा होगा. अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, कभी कभी उतार चढ़ाव होते हैं. मोशन दाई रेस्ट, मीन्स मोशन दे रेस्ट, कभी कभी मोशन, कभी कभी रेस्ट, राइट. फुल ऑफ नेचर, नेचर से पूरा फुल है. नथिंग कैन बी टेम, कुछ भी कट नहीं सकता है. चेंज्ड एवरी मोमेंट, हर मोमेंट को चेंज करते हैं. नेवर द सेम, ऐसा नहीं है कि हर टाइम चीजें सेम भी रहती है. सीजलेस स्प्रिंग, मतलब जिसको आप कभी, सीजलेस मतलब कभी कभी चीजें नहीं रोकी जा सकती हैं. सीजलेस कंटेंट, कभी कभी हम लोग बहुत सेटिस्फाइड होते हैं. डार्कनेस होती है कभी कभी, और सनशाइन होती है. दाई एलिमेंट, दीज आर दी एलिमेंट, सो दे आर ग्लोरियस फाउंटेन्स, राइट. लेट माई हार्ट बी, कि मेरा दिल इन पे आ चुका है. फ्रेश, चेंजफुल एंड कॉन्स्टेंट, बिल्कुल वैसे ही रहते हैं. अपवर्ड लाइक दाई, जैसे कि ऊपर ही चलते जा रहे हैं. इट हैज बीन रिटन बाय J.R. Lowell, right? Moving on to the word basket, the first word is blitzum, means very happy, gay. Cherry means happy again. Still means always. Heaven word means towards the sky. A very means tired. Motion thy rest means always in motion but keeps the same appearance, like a waterfall which is moving but appears to be at rest. कभी कभी रेस्ट पे भी होता है, कभी कभी चलता भी है. नेचर वी ऑल नो, इट्स द नेचुरल एनर्जी. नथिंग कैन टेम, मीन्स द फाउंटेन्स दे हैव ट्रिमेंडियस इररेजिस्टिबल एनर्जी, मीन्स एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होती है. एंड इट कीप्स मूविंग लाइक अ स्टेडी फ्लो, एक फ्लो में चलते रहते हैं. ever the same means because the flow of the water is very unbroken, means टूटा नहीं है. the moving stream appears to be steady all the time, right. aspire means to move forward, and ceaseless मतलब रोकना. ceaseless content means the fountain is always climbing upward. It still appears to be satisfied with its steady height. and darkness element means Sunday, मतलब कि दोपहर का टाइम हो रहा है. सनशाइन एंड डार्कनेस मीन्स रात में. दे मेक no difference to you because you are on a leaping and flashing from morning till night, right. Let my heart means, let my heart thee means, let me be the fountain, always keep fresh, changing and yet steady, and let me always look towards higher thing, right. Moving on to the exercise, first we'll be completing with the oral exercises where you will be completing all these question answers. Moving on to the, pick the correct options. The fountains, they flow into the dash, that is sunlight, night, moonlight, all these हमेशा ही flow करता रहता है एक motion में, right. So it is all of these, right. The fountain always remains dash, they always remains happy, right. The fountain still seems the dash, still seems the best, right. Moving on to the complete the lines of the poem. Now into the what, into the moonlight, right. And dash spray, that is rushing in spray, right. देखिए आर कैपिटल इसलिए है बिकॉज इट इज इन स्टार्टिंग, राइट. देन हैप्पी एट मिडनाइट, रात में भी वो बहुत खुश रहते हैं. और हैप्पी वो दोपहर में भी रहते हैं. हैप्पी बाय डे, राइट. सीजलेस कैसी हैं, सीजलेस एस्पायरिंग, एंड सीजलेस कंटेंट, राइट. डार्कनेस और समटाइम इट्स सनशाइन. and dash element, that is let me see, that dash element
That is di element, right? Moving on to the true and false. The fountain does not flow in the morning. Of course, it's false. The fountain is very glorious. Of course, it's true. The fountain looks very beautiful. It's true. Fountain is always sad. Of course, it's false. And everything can change with the flow of mountain. It's true, right? Moving on to the question answers. Please do all these question answers at your own in your respective notebooks. And I hope you all understood this poem that was all about fountain. Please keep doing hard work and stay blessed. Thank you.